we are discussing physical properties of group 16, 17 and 18. So first is the atomic size, that is atomic radii, atomic radius there or ionic radius. In a group 16, 17 and 18, as we move top to the bottom, for 17 also top to the bottom, as we go down, it is observed that atomic radius it increases. It means helium is the smallest one and here these are the biggest one. Fluorine is the smallest atom in a 17 group, acetylene or iodine it is considered as the biggest one. Means this topmost element they are smaller, and as we go down there, element present at the bottom they are bigger in size. Now why? Because their number of shells, quantum number of shells increases there. Next one, ionization enthalpy. Ionization enthalpy is also known as ionization potential. What is it? Amount of energy required to eject outermost electron from the isolated and gaseous atom. Now what is ionization enthalpy? It decreases from top to bottom. एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फॉर 16 ग्रुप, from 17 group also, and for 18 group also it decreases. Now across a period, as we move from left to the right, ionization enthalpy it increases. Now why? In a group, why it decreases? Because atomic size increases. In a period, why it increases? Because atomic size decreases. 16 group, this 16 group have lower ionization enthalpy than 15th group. 16th group have a lower ionization enthalpy than 16th group, as 16th group element. Now which are the 16 group elements there? These are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth there. These are 15 group element. हमारा स्टेटमेंट क्या है? एज अ पीरियड, इन अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो 16 ग्रुप का आयोनाइजेशन एंथैल्पी 15 ग्रुप से ज़्यादा रहना चाहिए. बट व्हाट इज़ आवर ऑब्जर्वेशन? 15 ग्रुप का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये 16 ग्रुप से ज़्यादा है. एंड व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज दैट 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैव स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. फॉर एग्जाम्पल, what is the electronic configuration of phosphorus here? ये क्या रहेगा? 3s2 3p3. Okay, and if I compare this phosphorus with sulfur, what is the electronic configuration of sulfur then? It is 3s2 3p4 there. Now you observe there p orbital electronic configuration. In phosphorus it is a p3, means it is a half filled. ये कैसा है? हाफ फिल्ड. इन सल्फर इट इज अ p4, ये कैसा रहेगा आपका? इनकम्प्लीट. एंड इट इज ऑब्जर्व दैट हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल. ये कैसी रहेगी? मोर स्टेबल. So it is very difficult to eject electron from such a stable electronic configuration. So it is observed that 15 group element possess more ionization potential than 16 group there. Next one is a electronegativity. Now what is electronegativity? It is the ability of atom to pull the shared pair electron towards itself. This term is always related to the covalently bonded atoms. Now in a 16, 17 and group, in 17 and 18 group, their electronegativity decreases down the group,
आप जैसे जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. स्पेशली फॉर 17 ग्रुप, 17 ग्रुप के लिए फ्लोरीन is a most electronegative element, then chlorine, bromine and iodine. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4. It is a highly electronegative element. Again, what is the reason? In a group, as we move from top to the bottom, why electronegativity decreases? Again, the reason atomic size increases. And halogens, the 17 group elements, they have very high electronegativity. Next one is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy is also known as electron affinity. So what is it? Amount of energy liberated when electron is gained by atom. In a group 16 and 17, in a group 16 and 17, these elements have negative electron gain enthalpy. In these two groups, electron gain enthalpy becomes less negative. यानी आप जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती जाएगी, लेस निगेटिव. In 18 group elements, they have large positive electron gain enthalpy. 18 ग्रुप एलिमेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस काफ़ी स्टेबल रहता है, तो दे नीड नॉट टू गेन इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबिलिटी. तो इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. फॉर 16 ग्रुप के लिए व्हाट इज़ द ऑर्डर हियर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर सबसे ज़्यादा है, देन ऑक्सीजन, सेलेनियम और उसके बाद है तुम्हारा टेलुरियम. 17 ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी रहेगा क्लोरीन का, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन.